Hello everybody. Today I will be discussing about a new topic that is ritual. In that I will discuss what is ritual, what is the importance of it and how it comes to in human life and what are the sanskar and how many sanskar Hindu religion is following. So talking about what is ritual. आप सभी को पता है rituals होते क्या हैं. This is the main aspect of the religion. Why I am telling the main aspect of the religion? Because if you will not follow the rituals, you would not be able to call as a religious person, or you would not able to identify that you belong to a particular religion. Because हर religion के खुद के rituals होते हैं, खुद के कुछ norms होते हैं, कुछ rules होते हैं that governs the people behavior when they are sacred. Sacred, that is like related to our connection with the God. Now, talking about the sanskar, I've told you I'll explain you about sanskar and what the types of sanskara we in the religions follows. So basically, sanskar hota kya hai? Sanskar helps you to achieve a spiritual nourishment or helps to achieve the salvation, liberation, and moksha. Now, why are like how people are thinking like how it helps to achieve the moksha, which is the ultimate aim, which is the ultimate purpose of human life, whether you belongs to any of the religion, whether it is a Hinduism, whether it is a Muslim, whether it is a Christian, whether it is a Sikh, but the ultimate aim of life is to what? Achieve salvation. So why it gave a spiritual touch from the birth of your time till your death. Okay, and basically there are some 40 type of sanskara. But in our Hindu philosophy, in the Hindu religion, we just only follow 16 kind of sanskara. I will discuss you one by one of these 16 sanskara. So basically, these sanskara of Hindus, they cover the entire life span of a plan which take him to doorstep of truth. ये पूरे लाइफ स्पैन कवर करता है, मतलब पूरा टाइम. When I will explain you the 16 kind of sanskara, you will understand the meaning of this line also. So basically, now first sanskara. First is what? गर्भवर्धन. गर्भवर्धन, that is conception. अब देखो, जब मैं संस्कार के नाम लूँ तो try to मतलब आप समझने की कोशिश करना by their name, like what it could be. You will get an idea. Just I will explain you when I. Okay, so गर्भवर्धन. गर्भवर्धन मीन्स गर्भवती. गर्भवती कौन? लेडी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट संस्कार. जब गर्भवती जो लेडी होती है, जब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, ओके, सो दे वर लाइक और बिफोर दैट दे वर वेरी एंथुसियास्टिक और दे प्रे फॉर अ गुड चाइल्ड. दिस इज एक्चुअली डन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द पेरेंटल ड्यूटी. मतलब पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि सो दैट दे वुड हैव अ गुड चाइल्ड. And during that time, the parents, both actually mother and father, they should have pure thoughts. मतलब उनके दिमाग में अच्छे thoughts होने चाहिए, अच्छी चीजें होने चाहिए to have a good child. And the good character, I see, like if you have a good character, so even your child will born with a good character or with that habits only. Now second is punsava. Punsava, that is fetus protection. अब देखो, पहला संस्कार क्या था? गर्भवर्धन. अब मेरे साथ एकदम कनेक्ट करते जाएगा तो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा, ठीक है. सेकेंड इज पुंसवा. अब देखो, बच्चा तो आ गया है, मतलब now the lady come to know that okay, she's pregnant. Now punsava, that is fetus protection. This is the second sanskara ceremony that is performed during second or third month. Okay, sorry, third or fourth month. So during in a month of pregnancy. Now you got pregnant. Suppose like that lady got pregnant. Okay, some lady got pregnant. और अभी 3 से 4 महीना चल रहा है, तो उसको अपने फीटस की प्रोटेक्शन के लिए जो होता है, ये होता है पहला संस्कार. अब फीटस प्रोटेक्शन देखते हैं, और ये वाला संस्कार हम क्यों परफॉर्म करते हैं? टू हैव अ मेल चाइल्ड, लाइक सो दैट still in our if you will see in India, some society wants to have कि उनका पहला बच्चा वो मेल चाइल्ड हो. क्यों? रीजन बीइंग ताकि उनका वंश आगे बढ़े. क्योंकि लड़कियां क्या होता है, गर्ल्स हैव टू मैरी आफ्टर सम टाइम. तो वो बोलते ना, किसी और की धन होती हैं लड़कियां. तो आफ्टर ऑल उसको कंटिन्यू कौन करेगा? उनके वंश को, उनके कुल को बॉयज करेंगे, ऑब्वियसली मेल चाइल्ड करेंगे. सो दैट्स व्हाई हियर दे हैव अ डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड. So this is a second sanskara, and this is actually restricted to the family members. This is not restricted to society and all, because ये अपने फैमिली मेंबर्स और विदिन की बात हो रही है अभी.
So first is Garbhavadhan, second is Punsavana. Now third sanskara is Simantonyana. Simantonyana, that is means satisfying the wish of the pregnant mother. So whatever the wishes of the pregnant mother, you have to be satisfied, because this sanskara is happening during the 7th month of the pregnancy. Here हम क्या करते हैं, prayer करते हैं for the ताकि जो मदर है, एक्चुअली 7 मंथ लास्ट के जो 3 मंथ होते थे वेरी डिफिकल्ट, एंड अब जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो she should be so happy, right? She should be like she should not take any of the stress, any of the worry. So to protect her and to protect her child, हम यहाँ पे क्या एक पूजा करते हैं, ठीक है? तो पूजा इज परफॉर्म सो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना? अगर अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा so that our infant or mother both would be just safe and could stay in a peace and calm environment. And this one more thing I want to tell it in this, that the future mother should have all good thoughts regarding their child and should have should not take much stress and all. Like हम बोलते ना, जब 7 मंथ होते हैं तो बच्चा होने लगता है तो हम बोलते हैं कि लड्डू गोपाल या बाल गोपाल की पिक्चर लगाइए, कृष्ण जी की पिक्चर लगाइए अपने कमरे में। क्यों? ताकि वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारे जो गुड कैरेक्टर्स हैं हमारे बच्चे के अंदर आए। दिस इज व्हाट the third sanskara. Now fourth one is JATAKARMA. JATAKARMA, that is what? Birth ritual. How? देखो, it's performed on a 6 days from the birth of a child. अब बच्चा क्या हो गया, बॉर्न हो चुका है, अब उसके जो 6 दिन होता है बॉर्न हुए, तब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इस वाले संस्कार को, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हाउस, सो दैट द चाइल्ड would keep in, like, child may stay in a very clean atmosphere where he would not be able to face any kind of the physical or mental problem. तभी हम ये संस्कार करते हैं और 6वें दिन हमारे घर में पूजा होती है ताकि हमारा एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है? अब 5th संस्कार है नामकरण संस्कार। देखो ना, नामकरण, नाम से सजेस्ट कर रहा है, बच्चा तो हो गया पैदा, now you are giving name to the child, right? This is what the नामकरण संस्कार है. It is performed on the 10th, 11th or the 12th day with the recitation of so many mantras. हम कुछ मंत्रास या इसको रिसाइट करके हम अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। और बच्चे का नामकरण हम कैसे करते हैं? while looking that the 27 नक्षत्र and the position of the moon. हम नाम रखने से पहले हम देखते हैं कि what are the 27 नक्षत्र भी किस प्लेस पे है, what is the position of the moon, and appropriate name यदि हम उसको देना है, so that should be given only by knowing the planetary position of the birth time. जब बच्चा पैदा हुआ तो planetary position क्या थी उसकी, like planet की क्या position थी, and the first letter is taken from the Hora Shastra. These things I am telling you which you need to really keep in mind or do some rote learning, because नामकरण हमने क्या सीखा, 27 नक्षत्र के हिसाब से what is the position of the moon and according to the planetary position of the birth time of that baby child, and the first name should be the first letter is taken from the Hora Shastra. What? Hora Shastra. Now 6th is Nishkarama. Nishkarama, that means taking the child outdoors. अब बच्चा पैदा हो गया, उसका नामकरण भी हो गया, अब उसको बाहर भी तो ले जाना पड़ेगा. So that you will perform after 40 days. अब हम उसको बाहर क्यों ले जा रहे हो? पहला मतलब बच्चा हमारे एक वर्ल्ड में आया है. So to show obedience to the sun, moon, wind, water, हमारे जो पृथ्वी के 5 तत्व होते हैं ना, the 5 elements of earth, उन सबसे उसको एक बार मतलब कि मिलवाने के लिए, ठीक है? सो दैट दे वुड लाइक, पहली बार जब होता है ना, वो पहली बार ये सारी चीज फील कर रहा है, ओ ये सन होता है, ये विंड होता है, फर्स्ट टाइम ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग. सो व्हाई वी डू दिस? टू एनहांस द फिजिकल एंड मेंटल द एज ऑफ अ चाइल्ड. नाउ 7 is ANNAPRASHANA. ANNAPRASHANA, that means giving the child solid food. Here we are Anna means what? Food. Here we are giving solid food, and that is only happen, हम यहाँ पे पूजा करवाते हैं. परफॉर्म ऑन 6th month, यहाँ पे चाइल्ड को अन्न देते हैं. अन्न में हम उसको स्वीट पोरेज या राइस पुडिंग ऐसा हम उसको देते हैं. उसके लिए एक सेरेमनी और एक पूजा होती है. हम जो भी डाइटीज है जिस भगवान को भी हम पूछते हैं, पहले उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके बाद में हम अपने बच्चे को ये जो है पहली बार फर्स्ट टाइम हम 6 महीने स्टार्टिंग में तो वो मदर ही फीड करती है बच्चे को. उसके बाद में जो अन्न वगैरह रहता है, ई सेरेमनी के बाद वो हम उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं.
नाउ 8th इज चुद्रकर्णा और मुंडन. देखो मुंडन इज व्हाट, हेयर कटिंग, यू ऑल अवेयर अबाउट इट राइट. तो ये होता है द फर्स्ट टाइम कटिंग ऑफ द हेयर ऑफ अ चाइल्ड. फर्स्ट टाइम देखो वो सब चीज फील कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है. फर्स्ट टाइम ही शी एक्सपीरियंस द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, लाइक 5 पंच तत्व. नाउ ही विल एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्ट टाइम उसके जो बाल आए हैं, मतलब तो वो हम उसको कटवा के हम उसको कोई होली प्लेस या यहाँ पे सराते हैं, आपको पता है. तो मतलब हम उसको कभी ऐसे, उसका पूरा पूजा होता है, सब कुछ होता है. आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट व्हाट इज मुंडन एक्चुअली. एंड दिस इज परफॉर्म वेरी ऑस्पिशियस डे आफ्टर द एज ऑफ द 1 year. जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके बाल जब लंबे हो जाते हैं थोड़े से, जब उसकी हेयर ग्रोथ शुरू होती है, तो हम फर्स्ट टाइम उसकी कटिंग करके उसको कोई होली प्लेस यहाँ पे सरा देते हैं. वाई इट इज why we are doing this ritual? Because there is a belief, okay, so that the child could get a better development of understanding for the long life. Okay, and here जो Brahmins होते हैं, they man Chandra for the healthy and long life of their child when they dispose this first here in holy places. Okay, now 9th sanskara is karnvedh. Karnvedh, that is ear piercing. See, karnvedh, karn that means kan. Okay, in Sanskrit it's called karn, that is kan. So here what you are doing, the ear piercing. तो जब 3 से 5 साल का हो जाता है तब हम उसके कान छिदवा देते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो हैपन विद द कमेंसमेंट ऑफ द सूर्य पूजा. उसके पहले हम क्या करते हैं, सूर्य की पूजा होती है. एंड फादर एड्रेसेस वन मंत्रा टू द चाइल्ड. पहले उसके राइट ईयर में उसकी ईयर पियर्सिंग करवाते हैं फर्स्ट. ओ गॉड मे बी हियर ब्लिस विथ आवर ईयर्स. दैट मीन्स मेरा जो बच्चा है, he will always listen a good thing and to have a good education. Here father pray for the God to have this. Now 10th sanskara is UPNANYANA sanskara. UPNANYANA is what? It is a sacred thread. UPNANYANA. अभी किसी को पता नहीं चल रहा है, because this is we are going to some kind of Sanskrit terminology. But when I will tell that Jenu, if you know it, Jenu, white color का जो thread होता है, जो लोग हिंदू people हैं, they would be able to get it. जो व्हाइट कलर का थ्रेड जो बॉडी में ऐसे पहनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्रेट थ्रेड. इट इज नोन एज द यज्ञोपवीतम. व्हाट इज कॉल्ड एज अ यज्ञोपवीतम. दिस इज एक्चुअली हैपन व्हेन अ मेल चाइल्ड अटेंड 5 years. स्पेसिफिकली मेल चाइल्ड के रहता है जब वो 5 साल का अटेंड, मतलब 5 साल हो जाते हैं उसको. ठीक है, तो जब उसके 5 साल हो जाते हैं और जब वो जनेऊ पहनना ये शुरू कर देते हैं, दैट इज यज्ञोपवीतम. So from that day it is called as the second birth of a child, that is a spiritual birth. Why? That is like he would be authorized to perform all the rituals from that time. And after 5 years of their age, after attaining the 5-year age, he started studying the Vedas. Or according to the Veda, study begin after this sanskar only. This is what UPNANYANA sanskar. Now this ceremony actually has 6 parts. Now you guys thinking, what are the 6 parts are there? Puja, Havan, Siksha, Diksha, Diksha, blessings. I will tell you. Puja, that means worship the God. Havan means when you do sacrifice and all, ना, when घी डालते हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम वो सारी चीजें sacrifice करते हैं, वो सारी grains हम हवन जो भी हमारे भगवान रहते हैं उनको देते हैं. Then Siksha, that means teaching quality and duties in their life. Diksha, that means भिक्षा. अगर आपने सुना हो, मतलब कि जब ये लोग ब्रह्मा, मतलब जैसे जो लोग जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या भिक्षा मांगते हैं, और वट एवर द भिक्षा दे विल गेट इन अ डे, दे हैव टू फुलफिल देयर स्टमक. लाइक उनको अपनी भूख उससे ही मिटानी होती है. भिक्षा, दैट मीन्स गिविंग मोस्ट सेक्रेट गायत्री मंत्र टू देयर चाइल्ड. एंड ब्लेसिंग्स, लाइक चाइल्ड वुड बी ब्लेस्ड बाय द गॉड, गॉडेस, गुरु एंड सिस्टर्स एंड एल्डर्स. नाउ द 11th ceremony is VEDARMBH, that is study of the Vedas and scriptures. Here it is done along with UPNANYANA. ठीक है, हम कैसे करते हैं इसको, UPNANYANA के साथ में करते हैं. दैट इज मतलब अभी जो मैंने जो सेक्रेट थ्रेड वो धागा पहनते हैं when the child in the age of the 5 years. I have told you just now. Okay, then this is VEDARMBH. It's like learning of the Vedas and Upanishads in Gurukul. अब आपकी एजुकेशन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, आपकी एजुकेशन 10th संस्कारा UPNANYANA में आपकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है व्हेन यू हैव अटेन द एज ऑफ द 5 years. अब यहाँ की क्या एजुकेशन आती है यहाँ पे, हियर यू विल स्टडी द वेदास एंड उपनिषद्स. एंड
this ceremony, like beginning of this period, is known as the upakam, and end of the each academic period, जब आपकी education सब कुछ खत्म हो जाता है, it is known as upsarjana. What is called as upsarjana? Now the 12th is sanvartana, that is completing education. अब यहाँ पे child अपनी education को complete कर लेता है, formal education को. Now he would have a good knowledge of the Vedas, Upanishads. He had completed his formal education in Gurukul, and after learning all these rituals and the rules of the life, he returned to the home from his teacher's ashram. अब वो गुरुकुल से मतलब किसके जो भी टीचर आश्रम है वहां से अब वो घर की तरफ जाता है. And when he complete his education, his first ashram brahmacharya complete. Now अब child ने when child completes the first education, मतलब कि उसका जो पहला आश्रम था ब्रह्मचार्य वाला, he completed. Now he is eligible to enter into the second stage, that is a household stage, grahastha ashram, and then he would be called as a qualified person to marry or could handle with lot of responsibilities of their family members. मतलब ऐसा नहीं होता था पहले जमाने में कि ऐसे ही शादी करवा दी. No, first you have to be qualified, then they will see you, and after that only when you would be eligible to get married or eligible to take this responsibility of their family members, then only they'll allow you to get married. Now 13 is what VIVAH. VIVAH is the 13th sanskara, that is marriage. Okay, this sanskara entry into the second ashram. Second ashram, I've told you what is second ashram. Grihast ashram is what second ashram. Here the life as an individual family begins. Because here, why it is an individual family? Because यहाँ पे क्या होता है ना कि आप यहाँ पे किसी को lifelong commitment देते हो. That is one wife and one husband, and that is the strongest bond between the man and woman, which take place with their parents, in between of their parents, their relatives, their friends. Here, bride and groom, they walk around the Agni hand in hand, and the bride used to sacrifice the grains and chant grains in the fire and chant some mantras. I think you guys are able to know it. जब मंडप में शादी होती है ना, मतलब विवाह मतलब की मैरिज, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब इधर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देते हैं कि 7 जन्मों तक हम साथ में रहेंगे. They used to walk around the Agni, और the bride जो दुल्हन रहती है, they used to sacrifice, like जो पत्नी होती है उनकी, they used to sacrifice the grains in fire. हवन देवता को पूछती हैं उस टाइम पे वो, सो दैट उनका एक अच्छा रिलेशन बना रहे, अच्छे से ही विवाह संपन्न रहे. Now 14 is vanaprastha, that means preparing for renouncing. Renouncing, you guys know what is the meaning of renouncing. Actually this perform at the age of the 50 to 60. यहाँ पे हम जितने भी जो वर्ल्डली डिजायर्स होती है हम उन सबको छोड़ देते हैं, एंड व्हाट वी परफॉर्म हियर, लाइक हम यहाँ पे सिर्फ अपने भगवान को याद करते हैं. देखो वनस्प्रस्थ आश्रम, वनस्प्रस्थ मतलब वन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, जंगल. यहाँ पे जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं वो लोग. एंड मैन विड्रॉ all the worldly desires, worldly activities, just retire into the forest and preparing himself for the sannyas to achieve a salvation, to achieve liberation, that is moksha. Now talking about the 5th sanskara, that is sannyasa. Sannyasa, that means it's a renouncing word. अब यहाँ पे तुम तपस्या तो कर ही रहे हो, संन्यास में तो वैसे भी आप हो ही. Now here you are leading a life of a study and meditation. You are doing the meditation so that you could able to know what's the inner spirituality. You could able to recognize what's the inner soul is like, what's your inner soul, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, आपसे वो क्या कहना चाह रही है. Okay. Now 16, that is the last rite, last sanskara, that is ANTYESHI. That is when the soul has left the body. When soul has left the body, हम तो कुछ भी नहीं, हमारी बॉडी है, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सोल है. तो जब यहाँ पे हमारी आत्मा जब बॉडी को लेफ्ट कर दी, तो अंतिम संस्कार. ओके, अब इसमें क्या होता है, हम फ्यूनरल्स अटेंड करते हैं तो उसकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक नॉट रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स होते हैं. ओके, दैट बॉडी शुड बी ले डाउन ऑन द नॉर्थ साइड पे, उसका हेड होना चाहिए, हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. एंड फर्स्टली एक्चुअली दिस डेथ बॉडी हम उसको पहले वॉश करते हैं, परफ्यूम लाइक वॉश करते हैं. दिस इट शुड बी रैप्ड इन अ न्यू व्हाइट क्लॉथ, एंड ऑल शुड बी दिस इज डेक्ड विद द फ्लावर्स, मतलब पूरे फ्लावर्स से हम उसको सब कुछ डेकोरेट करते हैं. एंड जैसे ही किसी इंसान की डेथ होती है तो व्हाट वी यूज टू कीप यू नो स्मॉल पीस ऑफ द गोल्ड, तुलसी लीफ एंड होली एंड गंगा.
So when we left, I was discussing about the Antyeshi, that is when the soul has left the body. So what happened, जब कोई मर जाता है, so what we used to do, we used to keep a small piece of the gold and tulsi leaf and some drops of the Ganga water. I put in the mouth of the person of the death bed. हम उसके साइड में, उसके डेथ बेड के साइड में ये सब चीज़ें रख देते हैं. दिस इज व्हाट द रिचुअल्स वी आर फॉलोइंग इट. ओके. एंड जो एल्डेस्ट सन होता है जो घर में, वही अंतिम संस्कार करता है, एज वी नो इट. अगर जब एल्डेस्ट नहीं होता है तो हम छोटे भाई या उसको किसी को बुलाते हैं. एंड बट बिफोर डूइंग ऑल दिस he takes a purificatory bath and he should chant the mantras. उसको एक purificatory bath लेना रहता है ताकि वो अच्छे से प्योरीफाई हो जाए अपनी बॉडी से. और he have to recite some mantras and all. एंड उसके जब कोई मर जाता है इंसान, तो फिर 10 दिन तक हमारे घर में कोई खाना वगैरह नहीं बनता है. सो वी यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम आवर रिलेटिव्स और फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स विद हेल्प in this case. So this is what the Antyeshi Sanskara. So I have discussed with you guys about 16 Sanskaras. So what's the first? GARBHADHAN, that is conception. PUNSAVANA, that is on the fetus protection. SIMANTONAYANA,